नया पाकिस्तान के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको बाकायदगी से मिलती रहे। Why are we not winning in Afghanistan? One word. Pakistan. Someone should ask, I mean, if I was an American, I would ask that $1.5 trillion at least have been spent in Afghanistan. What have we achieved in this? Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. One word. Pakistan. तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। Any basis, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan? Absolutely not. God, if I was the Prime Minister of Pakistan, I would have immediately told them that, look, we will fight this war our own way. We don't want any interference. We don't want your money. We don't want your aid. Look, it doesn't mean cutting the relationship with the Americans. It means we will fight it our way. Frankly, it does, because it takes two. And if you had your way, the Americans would cut their relationship with Pakistan. It's quite clear. And that would involve billions of dollars of aid at a time when Pakistan, goodness knows, has every reason to need that aid. Pakistan has lost $70 billion, the people of Pakistan, in this war. This was published by our own. This current government has published in the economic survey. Total aid is $220 billion. This aid is destroying us. Look, I would tell the Americans that what do they want from Pakistan? There should be no terrorism from our soil. That's all they should want. We'll do it our way. If I am perceived as a puppet of the Americans, it takes away my credibility and ability to fight terrorism. Because of me, there will be more people picking up guns. Look, puppets create terrorists. They create radicals. If it was a sovereign government, we would deal it with our own way. But the Americans, surely, would they not want a Pakistan government which would ensure no terrorism from our soil? I'm a Pakistani citizen, but my country has given 35,000 people dead in a war we had nothing to do with. $70 billion lost to the economy when total aid has been $20 billion. How would I feel that my ally, who we are fighting for, does not trust us, instead comes and conduct the operation itself? How does it help? Should they not have told our government? If it's either it's an ally or it's not an ally. How does it help in terms of the future stability of Pakistan for you to tell the Americans that you want to see them completely out of your country in terms of intelligence cooperation, in terms of their anti-terror activities in Pakistan? You want to cut all ties, and you believe that will lead to greater stability, when the Americans are alleging right now that the ISI, the Pakistani intelligence agency, is actively helping the Haqqani network and other militants do their deeds inside Afghanistan? First of all, if this myth being spun that 4,000 or 5,000 Haqqani Taliban is the reason why the US is not succeeding in Afghanistan. 140,000 US soldiers in Afghanistan, greatest military machine in history, is not succeeding because of these 4,000 or 5,000 fighters that are supposed to be holed up in North Waziristan. Does that make sense? That's number one. But I just come back to that. Does America not have a right, in terms of self-defense, to pursue these people if the Pakistani government will not pursue them? But are we Pakistanis not allowed to criticize American policy? Are slaves allowed to just say, does the United States have a right of self-defense if these people are not going to be rounded up and detained by the Pakistani government? Does the US not have a right to do it? But does the Pakistani government also have not any semblance of sovereignty in our country, that maybe they are fighting this war on terror, which is why 35,000 people have died? Can they not fight it their own way? अमेरिका हमारा दोस्त है, कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कई दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एलाय है। अच्छा, वो जो लोग मरते थे, जिनके बीवी बच्चे मरते थे जब बम फटता था,
वो जाके वो बदला किससे लेते थे? वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान से, दोनों तरफ पाकिस्तानी मार रहे हैं। मैंने जब पूछा कि ये आप जब उठाता था ये क्या कर रहे हैं, क्यों इजाजत दी हुई है? वो आगे से कहते थे कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं इनके पीछे जा रहा, लिहाजा हमें वो करना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए, अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर, तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, स्पीकर साहब, अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। एक मीटिंग हुई, ओपन हियरिंग हुई सेनेट के अंदर। उस मीटिंग के अंदर सेनेटर कार्ल लेवन पूछता है एडमिरल मलन से कि आप ये क्यों पाकिस्तान में ये ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं जब पाकिस्तानी हुकूमत मजम्मत करती है। एडमिरल मलन ओपन हियरिंग के अंदर कार्ल लेवन को कहता कि हम पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? अब ये शेम की तो ये बात है, वो आगे से कहता कि क्यों पाकिस्तानी हुकूमत सच नहीं बोलती अपने लोगों से, क्यों दोगली है? और ये ओपन, स्पीकर साहब, ये ओपन कैबिनेट सेनेट की हियरिंग पे जो पब्लिक के अंदर होती है उसमें ये हो रहा है। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मुझे कोई इंस्टेंस बता दें कि आपके मुल्क, आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं उनके लिए, और वो आप ही को बमबारी कर रहे हैं आपके मुल्क में। इसकी कोई दुनिया में मिसाल है? और ये हमने इजाजत दी। और स्पीकर साहब, फिर हम कहते हैं कि हमारी दुनिया में जी इज्जत नहीं है। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया अब्टाबाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानी को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे थे, हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एला है हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? तो क्या वो हमारे दोस्त थे या दुश्मन थे? सारी अवाम कंफ्यूज फिर रही है। दुनिया, खबर की दुनिया।